I was also the first one to go to Naukri also when I did in the corporate. But Delhi has a hub and all. I mean, नहीं, that but you know what, Delhiites नहीं कर रहे होते. they are people from outside. Yeah. So you came back and then you prepared. So did you join a coaching? I did. I went sporadically. So I have this track record of making coaching people rich and not work for being rich. फिर बाकी आपने खुद से पढ़ा है. हाँ, इसमें आपको खुद से ही पढ़ना पड़ता है. Self study is much more Yes, than what you yes. learn. Coaching will just tell you start कहाँ से करना है. But it's actually everything. It is all on you. आपको ही पढ़ना पड़ेगा. अगर कोचिंग वाज द फैक्टर विच मेड पीपल पास, तो सिर्फ एक कोचिंग होती है ना जिसके बेस्ट होता है और उसके बच्चे पास होते सारे. दूसरा, अगर कोचिंग की वजह से ही लोग पास होने वाले थे तो बिना कोचिंग वाले क्यों पास होते हैं? But there are very few जो बिना No, जो because एकदम no, बिना that is coaching the के. point is it's not that. It's the fact that everybody decides कि करना ही है. But do you need coaching No. in the beginning? No. No. To No. learn that, you know, those You codes and need everything. someone to tell you कि क्या है. How to prep? No. No. You need someone to just tell you कि क्या है ये चीज़, क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या बुक्स हैं, क्या बेसिक्स हैं. अगर आपको कोई वो बता देता है फिर आपको कोचिंग नहीं चाहिए, क्योंकि कोचिंग से आप नहीं पास होने वाले हो. मेरी डिसेबिलिटी को सारी सर्विसेज वर रिजेक्ट एंड नोबडी वाज विलिंग टू एक्सेप्ट माय डिसेबिलिटी इन द सर्विस एक्सेप्ट फॉर द IAS. टोटल लिस्ट में सिर्फ एक सर्विस मुझे अलाउड थी जिसके लाइक मेरा रैंक नहीं था. कि आप काम तो कर सकते हो पर हमें आप पसंद नहीं आए, हमें आपकी डिसेबिलिटी नहीं पसंद, हम नहीं लेंगे आपको. यार मेरे को कॉर्पोरेट में जॉब मिल गया बड़े उससे. सरकार जिसका मैंडेट है टू बी एन To इक्वल be अपॉर्चुनिटी inclusive. एम्प्लॉयर, वो मना कर रहा है ऑन द ग्राउंड ऑफ माई डिसेबिलिटी. Had you imagined that you would be, you know, getting all India rank and you'd No. be the first woman, differently able woman to actually, Yes, you know. I was the first person with disability to top the civil services. No. Some people are born to defy the odds, change the way people think, and make the world take notice. Today, we have with us someone who has done exactly that. She was the first differently abled woman in the history of UPSC to top the exam back in 2014 and has since paved the way for many others to become a part of these premier Indian administrative services. We bring you IS officer Ira Singhal to tell her incredible journey from being a girl who always lived on her own terms to becoming one of the most top rated Indian bureaucrats today. Hi, ma'am. Welcome to our show. Thank you. TDM Manthan. Thank you for making your time. Even though you're posted in Arunachal, you came here and gave us this time. So we'll start with your from the start, like Okay. of your life. So we would like to know the girl behind the IAS officer that Okay. you are now. Okay. So when you were a girl and when you were born, like what was the environment at home and what was the reaction to having a child born with a different kind of Okay. So I was born in Meerut and we had a joint family. तो हमारा पूरा family was together. So I think reaction तो शायद मैं नहीं बता पाऊँगी because I wasn't aware and conscious and I wasn't there. But I was always brought up to never think कि कुछ गलत है या कुछ अलग है या तुम में कोई कमी है. So जॉइंट फैमिली में और भी बहुत बच्चे थे एंड हमारे यहाँ ना ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि हर बच्चे का जजमेंट उसकी एबिलिटीज़ पे होता था, नॉट ऑन द थिंग्स दैट दे वर्ंट गुड एट. तो आप में कोई कमी है, दैट वाजंट द फोकस ऑफ योर आइडेंटिटी. जो हमारे देश में ज़्यादातर बच्चों के साथ होता है कि आपकी जो कमी है आपके घर वाले आपको वही याद दिलाते रहते हैं कि ये है, ये है, ये है. हमारे घर में वो नहीं होता था. हमारे घर में ये होता था कि ये इस चीज़ में अच्छा है, तो आपके जो टारगेट्स भी होते थे ना, या आपको डांट भी उस चीज़ पे पड़ती थी जिसमें आप ऑलरेडी अच्छे हो, टू परफॉर्म बेटर इन दैट. जैसे इन माय केस अब मैं स्पोर्ट्स में नहीं परफॉर्म कर रही हूँ तो मुझे डांट स्पोर्ट्स के लिए नहीं पड़ेगी ना, मुझे डांट इसी में पड़ेगी कि तुम्हारी पढ़ाई में नंबर नहीं आ रहे. एंड हर किसी से एक्सपेक्टेशन वाज द सेम. तो ऐसा भी नहीं था कि किसी से बहुत वो है और आपकी कैपेबिलिटी जो है ना उसके हिसाब से आपसे एक्सपेक्टेशन थी. तो अगर कोई पढ़ाई में अच्छा है तो उससे एक्सपेक्टेड है कि 90 आएगा और कोई ठीक है तो उससे एक्सपेक्टेड है कि वो 70 लाएगा. अच्छा, तो depending on that, Yes. were you always good in studies, bright? I was always the brightest child in the room. So most IAS officers are like always who are kids who are ऐसा always तो नहीं मैं कहूँगी.
Okay. बिकॉज मेहनत का रोल आप कभी डिस्काउंट नहीं कर सकते. एक्चुअली दैट इज अनदर थिंग जो हम नहीं समझते हैं. यू नो वो हेयर एंड द टॉर्टोइज वाली जो कहानी है, राइट, कि पहले वो एक्चुअली में सच है. वो एक्चुअली में सच है. आई हैव सीन दैट मल्टीपल टाइम्स इन माई लाइफ. मैं बहुत हेयर रही हूँ, अच्छा. तो आई नो दैट टॉर्टोइज इज ऑलवेज वन. यू नो मैं हेयर रही हूँ, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि टॉर्टोइज हमेशा जीतते थे. यू नो तो मैं मतलब काफ़ी आलसी इंसान भी हूँ. तो वो यू नो वो जल्दी से कर लो और फिर छोड़ दो, वो वाला जो चीज़ होता है. बट मेरे घर में इट वाज अ वेरी पॉजिटिव एनवायरनमेंट. एंड ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपको ये बार बार याद दिलाया गया हो कि ओ माय गॉड तुम बेचारे, या तुम में ये कमी कि है. आपको ये हाँ. इशू है. अच्छा, दूसरा चीज़ यू नो एक आई थिंक दैट्स वन थिंग दैट आई एस्केप्ड, जो मोस्टली इंडियन घरों में लड़कियों के साथ ज़रूर होता है, कि शादी बिकम्स द क्राइटेरिया ऑफ योर आइडेंटिटी. राइट, अभी भी होता है. हाँ, टोटली. शादी इवन दो becomes वी the हैव कम सो identity. फार. हाँ, आप क्या बनोगे, कैसे बिहेव करोगे, क्या पहनोगे, कैसे बात करोगे, क्या आपकी सोच होगी, वो सब आपकी शादी पर डिपेंडेंट होता है. राइट, कि व्हाट इज मोर कन्वीनियंट फॉर मैरिज. आपकी In a शादी way, right. कन्वीनियंटली कैसे आपकी पर्सनालिटी हो कि आपकी शादी कन्वीनियंटली हो जाए, आपको वैसा बनाया जाता है. मेरे घर में वो नहीं हुआ. So मेरे very घर- progressive Yes, parents you have. yes. Especially my dad. And my dad actually set the standards for everybody else in the household as well. And is So he मेरे- the eldest? My dad is the eldest. Oh, that's a And very मेरी good दादी thing. भी बहुत प्रोग्रेसिव थी. तो Oh, ये then it's very हाँ, nice. so हाँ. उस वजह से ना हमेशा ये हुआ कि शादी नहीं थी आपका पैरामीटर फॉर योर बिहेवियर एंड पैरामीटर फॉर हाउ यू वर. योर सक्सेस वाज योर इंडिविजुअल सक्सेस. आप खुद क्या बनोगे वाज द डिसीजन. अभी रिसेंटली वी आर गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल. मेरे एक कज़न और उसकी वाइफ आए घर पे. सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ व्हाट माय डैड इज़ लाइक. वो हस्बैंड वाइफ आए एंड एक दो मेरी मम्मी की साइड के रिलेटिव्स भी आए हुए थे. तो एक पापा की साइड के आए और मम्मी की साइड के भी आए हुए थे. तो बाय चांस ऐसा हो गया. तो मम्मी की साइड वालों ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं. तो द वाइफ रिप्लाइड कि मैं इनकी वाइफ हूँ. तो माय डैड इंटरप्ट्स हर एंड सेज नो, शी आस्क्ड यू हु आर यू, शी डिडंट आस्क यू हु इज योर हस्बैंड. True. सो true. हाँ. आप ये जवाब दो कि आपकी आइडेंटिटी क्या है. You know, Like, what so- do you do? Yeah, what do you do? What is your identity? Mhm. You know, who are you in the world? What is your contribution? So I think that was a very big thing that defined who I am and has led That's to right. you know a very positive self identity, because there was no helplessness in that. आप अपनी आइडेंटिटी ना, अगर आपके पास ये फ्रीडम है, आप बना सकते हो. बट अगर आपकी आइडेंटिटी इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट अदर पीपल आर गोइंग टू थिंक अबाउट यू, तब आप नहीं बना सकते. अगर हम बच्चे को ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे घर इन लॉज क्या सोचेंगे या पति क्या सोचेगा, तो आपकी आइडेंटिटी किसी और की सोच पे डिपेंडेंट हो गई. Of course. हाँ. राइट, और फिर आपको उस तरह का बनना पड़ेगा. बट अगर आपके आइडेंटिटी ये है कि तुम क्या करोगी या तुम वो हो, यू हैव टेकन अवे द हेल्पलेसनेस, यू हैव टेकन अवे दैट Of पावर course, फ्रॉम yeah. समवन एल्स. True. राइट, सो दैट इज हाउ माय हाउसहोल्ड वाज. So and then when did you come to Delhi? I was around 12. Acha, you came to हाँ. Delhi when you were 12. So and you studied in कहाँ कौन से school I गए was in आप? Loreto Convent first, and then in Army Public School. Army Allahabad. Public School. Yeah. That school has a lot of, I mean, if I'm able to say, brats, because because So they you know come what, from, you know, they have that thing. So Okay, we are I from loved, defense. I loved the school, and all my closest friends till date are actually from the 2 years I spent in TAPS. Okay. And उसका मैं एक reason बताती हूँ. All of those kids are very secure in their identity. Are they? Yes. Okay. That's the one thing I found about those kids. They were all very secure in who they were. So they didn't have a problem in accepting me as I was. जो एक बहुत बड़ी गलती और दिक्कत होती है बाकी जगहों पे, जहाँ बच्चों को बहुत कंपेटिटिव या बहुत ही यू नो इनसिक्योर किया जाता है. उस स्कूल के सारे बच्चे वो सो सिक्योर कि उनको किसी और की आइडेंटिटी एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम नहीं थी. And they're mostly defense people's kids, डिफेंस right? किड्स. एंड आई लव दैट अबाउट इट कि वो सारे बच्चे अपने आप में खुद से बहुत सिक्योर थे. अच्छा. This was not something that I found in my colleges. अच्छा. So my experience in school was so positive, and that was my first co-ed That's school. such a nice. Yeah, that was my first thing. co-ed school. उससे पहले तक मैं 12 साल गर्ल्स कॉन्वेंट्स में ही पढ़ी थी. तो you know it was such a positive thing कि वो बच्चे had no problem and they didn't question that how could I be so confident being such a tiny and such a disabled child. You know, just that was a problem. You know, as a girl, how can you be strong? ये बहुत बड़ी दिक्कत थी मेरे कॉलेजेस में.
when you grew up. यस कॉलेजेस में बहुत दिक्कत होती थी लोगों को इस बात से अच्छा। कि तुम एक लड़की हो तो तुम यू नो हाउ कैन यू हैव एन ओपिनियन, हाउ कैन यू वांट टू बी अ लीडर एज अ गर्ल, Okay. एंड दूसरा यू आर अ गर्ल विद डिसेबिलिटी ऑल्सो, उसके ऊपर से भी तुम चाहती हो कि तुम्हें कुछ यू नो स्पेस मिले दुनिया में या तुम्हारी कोई Yeah, आइडेंटिटी same हो. footing. Yeah. Yeah, right. How can you even think of being an equal? So if you're that was the yes. that was the environment. Yes, but that didn't happen in school. So all the kids in my school was so secure in who they were, and I absolutely, you know, मतलब उस एज में जब आप यू नो फाइनल 2-3 years ऑफ स्कूल सबसे ज़्यादा आपका साइकोलॉजिकल डैमेज या पॉजिटिविटी आपको उस समय मिलती है. एंड आई वेंट टू एन एनवायरनमेंट विच वॉज एक्सट्रीमली पॉजिटिव. सो वर द टीचर्स. Okay. So they were also encouraging. Yes, yes. And teachers तो मुझे कॉलेजेस में भी बहुत अच्छे मिले. You know, I was very lucky. I think कुछ you know, I've been very blessed in that कि मुझे बहुत positive teachers हमेशा मिले, who encouraged me, who you know made me at least gave me that platform to perform. You know, but I would say that कि TAPS का ये you know the brat thing. Yeah. You know, I think what people see is the confidence that those kids have, which is not there in other schools. So those Okay. kids have that confidence and they're able to, you know, be who they are. So वो शायद सबके लिए comfortable ना हो, but मेरे लिए Right. those kids were extremely positive, and So, yeah. they made me believe that there are nice people in the world also. Okay. And before that, there was a different नहीं, kind of. I was in girls convents, no, तो वो थोड़ा protected, थोड़ा sheltered. It's very थोड़ा वैसा conventional हाँ, also. Yeah. Right. But TAPS में the freedom to be who you are without being judged existed. Okay. And people were not threatened by you being a person with disability and wanting equality. Right. देखो लड़कियों को आज भी इक्वालिटी मांगने पे दिक्कत होती है ना दुनिया को, हाँ होती है. है ना. तो वहाँ पे ये नहीं हुआ मेरे साथ. एज अ लड़की अगर मैं इक्वालिटी मांग रही थी तो मेरी क्लास के लोग मुझे दे रहे थे. And you still have your school They gang. are still all Yeah. my closest friends. I'm Okay. still in touch. Have with any all of them also become like नहीं, IAS कोई भी सिविल officer? सर्विसेज में नहीं है. अच्छा. Mostly in corporates, some in army. Okay, Yeah, okay. everybody's doing different things. But I will say this: they're all extremely secure in who they are still, Which is a very Yes. good Very quality. rare thing yeah. also in the Very world. rare, very rare. and nobody was Yeah. competitive like that, you know. Mm-hmm. मतलब ऐसा भी नहीं था कि एक दूसरे से compete करके एक दूसरे को नीचे खींच रहे थे या जो Yeah, कि 11th bullying. 12th में So होता because है. many kids Yes. face a lot of bullying in yeah. school, especially if you have So, a. you know the crazy you know. thing was हमारे यहाँ ना बेकार लोग बुली नहीं होते थे. अच्छे लोग बुली होते. अच्छा, okay. So, you know, किसी में कोई कमी है उस पे उसे बुली नहीं होगा. Mm-hmm. किसी को ऐसे ही टीज करने के लिए बुली किया जाएगा. Like my best friend was called Robot Mm-hmm. because he was very good at computers. He's still very, I mean, he's in the IT sector only and he's extremely good at it. तो उसको रोबोट बुलाते थे और उसका ये टीजिंग वो था कि something that he loved doing उसको उस चीज के लिए टीज करते थे. तो you know, it was that So it was kind that of, positive kind Yeah, of yeah. bullying. Yeah. Not like being mean yeah. or. So, you know. yeah, so one kid had wild hair, so he was called Mowgli. Ah, So you know, That it's is things a- like that. It wasn't mean. it wasn't mean. Yes. Yeah. So there was like a healthy Yes, kind of. yes, yes. And you enjoyed school. Absolutely, I loved going. Mm-hmm. I think I hated getting up in the morning, but once I was there, I loved it. That's really nice because you know having a good experience while you're at school is the best thing. Yeah. That shapes you, and when you grow up, you have the best memories from school because Yeah. that's your first Absolutely, environment. You know, yes. first experience with an Yes. outside environment. Yeah. Yeah. So then I have been reading your profile. So then I read that you know you did ended up doing engineering, but you wanted to go to medical school. So how did that turn out to be? And you were good in science and like Yeah, maths. I was good in science and maths. Yeah, I was too lazy to study them, but I was good at them when I did. But I always wanted a job where I was doing something for the world around me. Okay. So that was the thing Yes, when since yes, beginning. Yes. Since beginning, I wanted that I have a profession जहाँ मैं अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ कर रही हूँ, जहाँ पे I can you know do something for the society, something for the world. I make lives better in a way. That was my aim since childhood. एकदम छोटे बचपन से ही that is what I wanted to do. तो उसमें बस ये था कि and as a child with disability मैं डॉक्टर्स पे तो पूरी ज़िंदगी जा ही रही थी ना. Of course. So you were also Yes, being treated, yes, you know, yes, during yes. that time. Yeah.
तो पूरी ज़िंदगी जब आप डॉक्टर्स पे जा ही रहे हो, राइट फ्रॉम बर्थ आप डॉक्टर्स पे ही जा रहे हो, तो दैट बिकम्स समथिंग दैट यू सीइंग एवरी डे ना. सो मेडिकल सीम्स लाइक द ऑब्वियस वे. So was it kind of a difficult treatment? Was it tough? सो स्कोलियोसिस इन पर्टिकुलर का ट्रीटमेंट बहुत इंडिविजुअल वैसा वो होता है, डिपेंडिंग ऑन योर सिम्टम्स एंड ऑल, बिकॉज इसका एक ब्रेस बनता है विच समहाउ गॉट स्किप्ड इन माई केस. थोड़ा मतलब थोड़ी गलती हो गई वो वाला चीज़, बट अदरवाइज स्कोलियोसिस में जनरली ब्रेस बनता है विच इज़ क्वाइट अनकम्फर्टेबल टू वेयर बिकॉज वो होता है एंड इट्स इन योर ग्रोइंग प्रीटीन ईयर्स एंड ऑल. But it can it cure the? It will stop the curvature growing. Yes. Okay, Yeah, okay. it does that. And can it also straighten like? Yes, it straightens the spine. Okay. Yeah. And then the person will become like normal in the way. पता नहीं, but Okay. mostly that is the attempt. Okay. That is the okay. attempt. Mhm. But वो आपको इसीलिए बहुत सारे लोग विद स्कोलियोसिस बचपन में हुआ होता है, बट वो क्योर हो चुका होता है टाइप्स. Oh, that's हाँ. that's great if हाँ, there हाँ, it can be yes, fixed. yes, yes. Yeah. वो Okay. ब्रेस, बट वो केस टू केस होता है, किसने क्या वर्क करेगा. Mhm. So वो था, but doctors was something that I was seeing since childhood. Okay, So that seemed yeah. like you know, that's a good way to kind of be a part of the world and you know, help people around you. Yeah. उसके अलावा the other thing was civil services. So you had that thing of Yes, civil services yes. from the Childhood in mind. Okay. Yeah. So many people were like around you in your family. No. I have no government servants at all in my family. Okay. मेरे यहाँ कोई नौकरी में ही नहीं है. मेरे अच्छा. दूर दूर तक कोई relatives नौकरी में नहीं है. Your father is an engineer. Yes, but my dad has his own thing. Okay. My parents are consultants. मेरे फैमिली में कोई सरकारी नौकरी छोड़िए नौकरियों में ही नहीं था. अच्छा. हाँ, we come from business or professionals. तो I am the only government servant in my family. That's such a Yeah. huge. I'm the only Yeah. government servant in my family, and I'm I was also the first one to go to नौकरी also when I did in the corporate. तो मेरे यहाँ वो है ही नहीं. Okay. Yeah. So you're the first one, and it's I'm does the it only have one a till now. different kind of respect that does it I don't get? know. Yeah. I still get scolded the exact same way that I did when I was 10. Home is home then. Yeah, not just my home, all my relatives as well. Okay, so that's Yeah. cool then. I think Yeah, that's yeah, cool. yeah, Yeah. yeah. So when you were saying that, you know, I just want to become a doctor. So did you also study like that, or were you like free? Okay, मैं जैसे पढ़ना है नहीं, वैसे ही मुझे पापा ने पढ़ूंगी. 12th में बायो ही नहीं लेने दी. Right. Okay. हाँ, मुझे तो बायो ही नहीं लेने दी. Because he was like कि तुम खुद पेशेंट जैसी दिखती हो, तुमसे कौन इलाज कराएगा? I grew up in a very cruel household also in that way. That's a bit crude to say, but maybe he नहीं. meant. No, yeah. my parents are very clear on things. My dad doesn't mince words, and Which it's is a not good it's thing, not in yeah. a negative way. Of course. हाँ, I was not brought up in a negative environment at all. It was very realistic कि बेटा ये सच्चाई है. You have to deal with it. Even like childhood, I was never made to hide from my disability. Of You know, course. ऐसा नहीं था कि आपकी डिसेबिलिटी को एक्नॉलेज ही नहीं किया जा रहा है. मतलब आपको ये दिखाया जा रहा है नहीं तुम्हारे में कोई कमी नहीं है. ऐसा नहीं है. आप में ये कमियां हैं, but these are your good things and you have to focus on this. So his point with that is also कि भाई तुम पेशेंट जैसी दिखती हो, तुमसे कौन इलाज कराएगा? तुम्हारे लिए बेटर इज अ डिफरेंट प्रोफेशन एंड ही इज Yeah. राइट इन दैट. Right, आई of थिंक वो course. मेडिकल में जो फिजिकल स्ट्रेंथ एज अ डॉक्टर आपको चाहिए होती है, ही वाज राइट इन दैट. आई डिड नॉट हैव दैट स्ट्रेंथ. मैं बन भी जाती तो मे बी क्लियरिंग मेडिकल वुड हैव बीन अ प्रॉब्लम बिकॉज आपको पेशेंट को ही उठा के अगर Right, रखना right, है, मैं नहीं कर सकती. राइट, Long hours of standing. नॉट अ प्रॉब्लम. Like That standing. is also not a problem. But the point is आपको पेशेंट की अगर कुछ That भी strength, वो yeah. चेक करिए, आपको स्टिचेस भी करने हैं, आपको वो भी करना है, all of that strength doesn't exist. Strength. Right. Right. तो इसलिए his point was that and he was very valid in that. मतलब उस समय मुझे बहुत गुस्सा आया and I completely the one thing I did not want to do in my life was become an engineer. Okay, you didn't want to do Oh, engineering. Yeah. Since childhood I had one thing, engineer नहीं बनूंगी. I ended up becoming an engineer. So and आप I'm क्यों नहीं बनाते? Because there were too बस many engineers. नहीं, या वो पापा बस करे इसलिए. नहीं, अच्छा. पापा ने कहा भी नहीं बचपन में. अच्छा. Okay. बस जस्ट you know नहीं, वो नहीं होता आपके दिमाग में कोई चीज़ कि नहीं ये नहीं करना. So that was the one thing that I was like कि नहीं ये नहीं करना. Ended up doing that. So yeah, And and you- I'm still yeah. the world's worst engineer. I'm horrible. No, I'm sure you I mean, cleared I cleared know it nicely. things, yeah. but I'm just not interested. Which discipline did I you? was a computer engineer. Computers. Yes. Yeah, Yes. yeah. Yes. So I used to be extremely good at programming, but I just don't want to do it. So I mean, you can do both, I guess now. नहीं, नहीं. Because even the services नहीं, need a नहीं, lot नहीं, of tech. नहीं नहीं? टेक में ऐसा नहीं है. You can't.
the way technologies have grown, you have to keep up with that. Okay, so Yeah. it needs that kind of Right, it's rigor. not. अब मैं ऐसे आप इंसल्ट नहीं कर सकते कि Not अपने at all. नहीं मैं अपनी बात कर रही हूँ. If I start thinking कि I'm capable of that, I'm not. I'm very Had you realistic, but pursued it then, of that's course. a different thing, obviously. But then even while engineering, I was doing MBA only. तो मैं कॉलेज में भी कॉलेज में भी ना सारे इवेंट्स मैनेजमेंट में क्लब्स में होती थी. मैंने Okay. पूरे 4 साल इंजीनियरिंग कम MBA ही ज़्यादा किया था. देन आई थॉट कि जाके उसकी डिग्री भी ले लो. So I went and did my MBA properly and got a degree as well, which I loved. But my college was, I organized almost all fests, Okay. all छोटे छोटे events also, participated in everything. So yeah, it was a very all-rounded development. So sort of. you got good at organizing things Yes. already, like Yes. which is a thing Managing needed in the things and services. organizing things, Yeah. yes. And Okay. the biggest skill you learn is people management. Right. Managing different people's expectations, egos. Egos. Yes. And understanding what motivates people and getting them to do that. That's skills that you learn at college Right. level. Making people work. Yeah. Yeah. So you said college had a different environment. So Yeah. I just want to understand, how was college different? You went to NSIT first, Yes, no? yes. That's in Pitampura. No. NSIT is Dwarka. Okay, this is Dwarka. That's too far from. Pitampura is farther. Acha, okay. Because that's not in Pitampura, that's in Bhavana. That's in. DC is in Bhavana, which is Okay. DTU now. That's in True. Bhavana. Okay. So Fine. how was college otherwise? Yeah. I had a lot of fun, but like I said, it was extremely competitive. And yes, I had excellent teachers. I had a brilliant time with teachers, very encouraging, very supportive, and as far as management and teachers goes, I had a very very nice relationship. But I would say this, that mostly people had this issue that they don't like the fact that you're a girl and you're a girl with disability. You're not a pretty girl, you're not a perfect looking girl. तो आप तब जब इक्वालिटी मांगते हो लोगों को दिक्कत होती है. और वो आज भी होती है. When you're in the Yeah. service. I was very saddened. मैं बहुत recently एक college के event में as a chief guest गई theatre में. And I've done a lot of theatre in my school and college. I've done more Theatre than is something you yeah, I I've love, done yeah. more than 150 plays. Oh, that's great. I've done a lot of as an actor, as a director, as a this thing. That's done, another skill. Yeah. So I did a lot of theatre right from school itself. I used to do. Like I said, मेरे parents ने मेरे से सब try करवाया है. But it's the best thing. Yeah. I mean, I've the done best it. thing that you I've can done a do, lot yeah. of theatre. तो आज भी and I was one of those people जो made sure कि लड़कियों का रोल प्ले में आइटम गर्ल का नहीं हो. ये और थोड़ा सा मतलब And- it has substance. Yes, Yeah. right. But I was very saddened कि मैं बहुत recently एक कॉलेज में गई and उनके थिएटर में लड़कियों का सिर्फ वही रोल था जो 15 साल पहले मेरे कॉलेज में भी लड़कियों को दिया जाता था. Which was स्टेज के एक कोने से लड़की चढ़ी, क्रॉस किया, लड़के जितने भी स्टेज पे हैं उन्होंने सीटी बजाई उस पे, कमेंट्स मारे and the girl gets down. That was part of the. Yes, that was Sure. how women used to be portrayed in theatre back then, in college theatres. And आज भी वही मुझे देखने को मिला. I was extremely saddened. I actually stopped the play and I went on stage and I said this. कि Oh. तुम्हें एक लड़की के लिए सिर्फ यही रोल मिला. तुम्हारे दिमाग में आज भी लड़कियों का रोल बस यही है. To be objectified like that. And I'm so ashamed of girls who allowed that to happen to themselves. As a girl, you are allowing the world to treat you like that. You also have to stand up Yes. to that, right? So हम लोग एक्चुअली वही बात थी ना, हम वो लड़कियां थी जो ये नहीं करने को तैयार थे. तो हमारी दिक्कत होनी थी ना. वो हमेशा every वो time you होनी have थी. run into a conflict when something like Yeah, this so जब आप happens. बोल रहे हो कि नहीं मुझे तुम एक कंट्रीब्यूशन करना है, मुझे कंट्रीब्यूटिंग रोल चाहिए, तो फिर वो तो नहीं समझ आएगा ना उनको. तो आप कैसे मांग रहे हो रोल उस तरह से. So that was one thing कि people had a problem with and I see that still happening. Very sad that 15 साल पहले के भी वो चेंज नहीं हुआ. But you being there when you were, it did change for some time. Yes, at so least. we made sure we had women in lead roles. The plays That's such a centered great around thing, women, yeah. and not we had very normal characters, women who are making mistakes and who are learning from them, and who are living their lives sort of roles. And वही चीज़ें conflict में आती थी, because अगर मैं कह रही हूँ कि I have worked in this club as hard
and I want to be the secretary or the president of this club, then people have a problem because तुम्हारा gender problem है. Not that you're not capable of work, ये कोई नहीं कहेगा. But लड़की थोड़ी बनेगी president. अच्छा. That is the mindset, right? And मतलब we had a female prime minister and a female president, but वो mindset तभी नहीं गया था. तो college में ये बहुत conflicts थे. And this is This happens and you learn that, okay, the Yes. world is like yes, that. and then what you learn when- is when you see. you have to find your way through people's opinions. Mhm. You know, you have to find your way through people wanting to not give you that equal space. Mhm. Mhm. So I think those were very useful lessons Of that course. happened. Which is your favorite play that you played, or which was The two do you many still of them. read and can you just tell us few so that people might just want to read ऐसे नहीं हम that लोग अपने भी thing. लिखते थे बहुत. Acha. हाँ हम लोग But is अपने there any one particular play that you really like and you still remember? I'm मतलब ऐसे वो नहीं है. I Okay. can't recall. ऐसे बहुत थे. Okay. One I wrote myself. One was we made Evil Cinderella. Evil Cinderella. This was in school. Because Cinderella was always the So nicest, I, the sweetest. so we made Cinderella evil, Mhm. and the stepsisters were sweet. Oh. Yeah, so we This did is the reverse yes. of- oh. We did Evil Cinderella. I had written that play myself, and that one was really fun. वो perform करने में भी बहुत funny and fun play था. Because Cinderella snatches things away, and like suddenly the prince is about to propose to one of the sisters, and she goes and snatches the crown, and it's like, yes, I knew it. And the prince is like, wait, what? So, Why did you think of reversing Cinderella's role? there are Because- different perspectives, right? जो जीत जाता है उसका perspective ही देखा जाता है ना. What if there's a different perspective to a thing? What if Cinderella is not the sweetest girl, Yeah, there are always different perspectives to every story. The winner writes the story. तो आपको सिर्फ उसका perspective पता है ना. दूसरों का नहीं पता. अगर Kauravas would have won, तो perspective शायद हम दूसरा देख रहे होते ना. Right. Yes. One day I remember when I was talking to you about something social that you were doing, and you were still in the North MCD that time. MCD that time. So you told me it was a long conversation, and you told me Arjun was Brihanala for a year, no? So I was like, okay, yes. And then I was stuck to that point, and then I went back and watched that episode, So I remember that. So that reference really, I mean, it's so real. It Yeah. works. Yeah. Yeah. Life So. is the same. सिर्फ situation मतलब सारे humans are the same, life is the same. आप learnings लेना चाहो तो कहीं से भी ले सकते हो. True. So, like from college, then you you did your engineering, then you went on to do Yeah. MBA. Yeah. So you enjoyed MBA much Yeah. more than what you. I mean, same conflicts. Okay. Same Even conflicts. in Delhi University. Yes. Same Oh, I conflicts. thought that was No. much Same cooler, conflicts, nicer. Same conflicts. No. No. People. So you have to understand, in that period, the society itself is like that. Okay. There were hardly any women CEOs. There were hardly any. There were much अभी भी लोगों lesser, के दिमाग में आता है fewer. लड़की को MBA करा रहे हो तो HR करा रहे हो. The first thing is First that thing is क्योंकि she's HR the करा HR. दो ना. Yeah. तो वो conflicts तो exist करते ही हैं. So after that, did you think like I have to take up a job, or you started preparing for? No, I did the- not prepare for civil services immediately. So civil services was something that I wanted to do when I was in Meerut. Okay. Yeah. So when I was that young, तब मेरे दिमाग में civil services था. But दिल्ली आके this was not something that I thought of because दिल्ली में कोई भी नहीं कर रहा होता है. But Delhi has a hub and all. I mean that नहीं, there's but you know what? Delhiites नहीं कर रहे होते. they are people from outside. Yes. अच्छा. दिल्ली के स्कूलों के बच्चे हार्डली सिविल सर्विसेज एंड ये सब सोचते हैं, सरकारी नौकरियां सोचते हैं. यहाँ लोग जनरली इंजीनियरिंग MBA करके कॉर्पोरेट के जॉब्स एंड वही सब करते हैं. मेरे आसपास कोई भी नहीं था जिसने कभी किया हो. सो आई दिल्ली में तो आपका ना फिर वही माइंडसेट बन जाता है कि ये करेंगे वो कर. So what happened was that I went into corporate. I really liked my corporate job. I was at Cadbury as a strategy manager. Okay. Yeah. Cadbury's is like Cadbury. everybody's I favorite. loved it. Yeah. Everybody's favorite. Absolutely loved my job that way. I mean, free chocolates for life. Like, what else do you need? That's the best. Right? So They have their office here. They No. had it in Bombay. Bombay. Yeah. So you went to Bombay? Yes, I was living in Bombay, working and living in Okay. Bombay. So For how many years for that? 2 years I did that. Okay. But I quit in the second year ka usme. So then I kind of, How did you like Bombay better than Delhi? No. let's not start that debate. Please tell us. I'm a hardcore Delhiite.
Okay. I love okay. some parts of Bombay, but Delhi is But where how was I the I mean, this experience of living and working in Mumbai in a Uh, huge firm, like, you know, I Cadbury's don't is think it would like, have been any different had it been a firm in Delhi. oh, okay. So I it don't did think that. it. No, Okay. I don't think. You have to understand, it's not Mumbaikars in Bombay, a Mumbai firm, no. It's people from across the country. Huh. So we're not talking of एक city के लोग, no. So I don't think that would have been different anywhere Okay. else. So you're a pure Yeah, pure Delhiite. I'm Yeah. a Delhiite. Okay, that's hardcore. nice. That's Yeah, I'm a nice. hardcore Delhiite. Mhm. I've lived in Delhi for 30 years now, so yeah. A So little why less, but yeah. did you leave that in between? Yeah, so when I was there, I loved my job. I earned a lot, and I was living in South Bombay in Pedder Road and That's all. the best So part yeah, of yeah, Mumbai. exactly. But then I started feeling ki I worked so hard. There was a point I was working 20-hour days, and I'm not kidding. I actually mean 20-hour days, including weekends. Oh. And then I started thinking ki I work so hard, but there's not a single person on earth who will say that because of my work, their life is better. And that's something that has always been my driving force, to make the world happier So and from the more beginning, positive when around back me. you know. Yes. So that was always my aim. That was always what made me happy, to make sure that everybody else around me is, I'm making a difference, positive difference to their lives. So that thought came because you were working so long, and then No, things were it was not- always no. something that I wanted to do. But Yes, here I yes. realized that this is not happening. Okay. There's nobody on earth who will say that because you work so hard, their life is better. That their families will have a brighter future. They'll be, anything positive has happened to them because of my contributing so much. Of course. And so I realized that I need to kind of go back to the ideas that I had in childhood. And that's where I quit and gave civil services. So you quit Yes. already, and then Yes. you prepared after that. Yes. You came back to Delhi. Yes. Okay. And I came back to Delhi not because Delhi is a services hub, but it's my home. Of course. Yeah. And Delhi is also one of the like the centers where. No, but people- मुझे उस चीज़ का कोई फर्क नहीं था. I didn't even Right, know that. right. To be honest, I didn't know that. Oh, okay. I was very disconnected from the whole preparation and everything. Okay. Because मेरे घर में कोई नहीं है. I have no friends in services. I didn't know a single person. But you didn't think of coaching. I did. Okay. But that's something that you generally think of in this thing. No, engineering and MBA की भी तो coaching लेते हैं ना. True. हाँ. So it's not that I knew anything about anything. Okay. So I started from zero, बिल्कुल. So you came back and then you prepared. So did you join a coaching? I did. I went sporadically. So I have this track record of making coaching people rich and not work for being rich. So I used to pay, and that's so my parents actually, when I initially quit, I was like, हे भगवान, इसने फिर आलस कर रही है and इसको फिर निकम्मे बन के घर में बैठना है. So they thought my whole plan was कि भाई बहुत मेहनत हो गई, अब quit करो, घर पे बैठो, क्योंकि I have always been the lazy child in their opinion. And I used to be bad at मतलब मैं उतना एफर्ट ही नहीं मार पाती थी पढ़ाई के लिए. I couldn't be. But you were effortless. हाँ, मतलब जब इतने सी मेहनत करके पास हो रहे हो and I'm not competitive enough to want more than that, तो ठीक है ना, चल रहा है काम. Yeah, I'm not very competitive as a this thing. People will be like, एक minute, you gave civil services, you gave engineering, you gave MBA Yeah, entrance. that is the How are you thought. saying you're not competitive? But I'm not. Those are the essentials to get to those jobs and those educations. ना मेरे पास option नहीं है. मतलब वो सब मैं बिना competitive हुए कर नहीं पाती ना. Okay. So आप that's competitive that's not an exam से- innate quality, No, but I'm not a but- competitive person yeah. at all. I don't think of other people as competition or anything that I need to measure myself against. And that didn't happen Which to me is in a very childhood good also, thing. no? Yeah. I've never been brought up to think of other people and then think of myself. I just think of, am I okay being who I am? So that's where the difference was. So my parents were convinced कि कंपनी में काम करना पड़ता है, तो भाई इसको ना कुछ नहीं करना है, इसलिए वापस से घर आ गई है. बट आई डिडंट रियली क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं जानती थी ना कोचिंग के बारे में, मतलब सिविल्स के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती थी. Okay. तो मुझे तो यही नहीं पता किताबें क्या होती है, सब्जेक्ट क्या होते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था. सो आई तो हैड टू काइंड ऑफ लर्न एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच. So you did join, but did you keep at the coaching or you just quit? I went sporadically. Also, so मेरे बाद साथ क्या हुआ ना, the format completely changed. Acha. Every year Of that I the gave the exam. exam, format completely changed. तो
इट्स लाइक यू नो वो फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ का वैसे. ओके, फिर बाकी आपने खुद से पढ़ा है. हाँ, इसमें आपको खुद से ही पढ़ना पड़ता है. सेल्फ स्टडी इज मच मोर Yes, देन व्हाट यू yes. लर्न. Coaching will just tell you start कहाँ से करना है. But it's actually everything. It is all on you. आपको ही पढ़ना पड़ेगा. You can't depend on coaching to kind of save you. अच्छा. आप एक बात सोचो ना कॉमन सेंस की. अगर कोचिंग से बच्चे पास होते तो एक ही कोचिंग वाले पास होते ना. अगर कोचिंग वाज द फैक्टर व्हिच मेड पीपल पास तो सिर्फ एक कोचिंग होती ना जिसके बेस्ट होता और उसके बच्चे पास होते सारे. दूसरा, अगर कोचिंग की वजह से ही वो लोग पास होने वाले थे तो बिना कोचिंग वाले क्यों पास होते हैं? वो बट दे आर वेरी फ्यू जो बिना जो एकदम बिना कोचिंग द के पॉइंट इज इट्स नॉट दैट. इट्स द फैक्ट दैट एवरीबॉडी डिसाइड्स कि करना ही है. कोचिंग लेना ही है. इट्स नॉट कि बहुत फ्यू पास हो रहे हैं. इट्स द फैक्ट दैट एवरीबॉडी डिसाइड्स कि करना ही है. But do you need coaching No. in the beginning? No. No. To No. learn that, you know, those You codes and need everything. someone to tell you कि क्या है. How to prep? No. No. You need someone to just tell you कि क्या है ये चीज़. क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या बुक्स हैं, क्या बेसिक्स हैं. अगर आपको कोई वो बता देता है फिर आपको कोचिंग नहीं चाहिए क्योंकि कोचिंग से आप नहीं पास होने वाले हो. Acha. Acha. This is new to me because Yeah. I thought, I mean, so Exactly, far right. coaching, yeah. That is what I'm everybody- saying कि सब ये Yeah. मान लेते हैं तो जिसको ज़रूरत है नहीं है वो सब चले जाते हैं. क्योंकि पहले तो जानना ही पड़ेगा कि कैसे ना? आएगा, what will be the नहीं, format. but that's because you Yeah. don't have anybody in your life. If you have an yeah. elder brother, if you have an elder sister, That- if you have a or cousin, maybe then, if your yes. parents are somebody in the services, Then, you have yeah. uncles, aunts, तो फिर आपको नहीं चाहिए ना. फिर मे बी नहीं चाहिए हो सकता है. But if आपके कॉलेज में yeah. अगर टीचर्स हैं जो हेल्प करा सकते हैं. Maybe yes, but then even in my case, I would not know anybody So in my then you- family. then you will do that. Yeah, Then you will do that. But what I'm saying is it's not essential. it's not essential. So that is one tip for people who are Yeah, watching yeah. this. It's not coaching is not basically essential. कोचिंग आपको स्टार्ट करने का Yeah. पॉइंट दे देती है. कोचिंग आपको बता देती है यहाँ से स्टार्ट करो. बट ये बहुत कॉमन सेंस की बात है. अगर कोचिंग से लोग पास हो रहे होते तो कोई एक कोचिंग के ही पास हो रहे होते. इफ कोचिंग वाज मेकिंग ऑल द डिफरेंस. Acha. So, but did you run into difficulties? Did you run into like, you know, कि अब इसके आगे I don't know how to prepare or how what to do. How did नहीं, that? there is no इसके आगे. Okay. या इसके बीच में whatever. I नहीं, mean. there is no yeah. not like that. आपको जितनी किताबें मिल रही हैं आप सारी पढ़ लो. Okay. सब पढ़ लो. What were your subjects? When I started I had public administration and geography. तब दो होते थे फिर then it became one. So then I had geography. Most people do public administration, right? Pub No, and- geography. Geography. Yeah. Because it's more scoring. No, No. no. It's a subject that most people have studied at some point. In school? Yeah, Back and it's in not school. Yeah. it's not a it's a lot of logical connections and logical study rather than just mugging up stuff. Okay. Yeah. Geography is very logical. But geography as a subject never got that popular because when you enter college, Because you there's either not do much- BCom honors, Because political there's science not honors, much for English geographers honors. to do professionally. That's the reason, yeah. Huh? Okay. Professionally, there's not much for a geographer. Ki to what kind of job would you get? Is it like that in India or do people even do outside? across the world. Across the world. There's not much that you will do as a geographer, right? क्या करोगे आप? क्या job है? That's the So point. this subject is taken only because you know you Yeah. need to clear. I don't know that. Do Okay. they? Because I mostly guess. engineers take geography and PubAd. Do they? Because yeah. PubAd is one that you need to know things about government Huh, and it yeah, makes right? a lot of a lot of sense when and you then come in. people take other like a language which they know Yeah, or something yeah, like yeah. that. People take all subjects. Okay. सब yeah. subjects ही लेते हैं. Right. हाँ. So you didn't get into any hurdles during the preparation. Like you'd studied on your own and then you So what do you mean made by your own hurdles? notes. Like you know, I'm not able to. There's a lot of coding also, na. There is something like that. When I had given an exam, so I Coding. it's like PHRWX, and now you tell us that what is this? There was you're something like talking that. about CSAT sort of subject? Something like Logical that. It was reasoning? there. Logical reasoning. That's in Logical. CSAT. I think it's there in. That's CSAT. CSAT का paper. I guess it's there even in other papers. That it's not. Because I was studying and I thought, what is this? I don't know how to do this. Okay, okay. So it's not like that. CSAT है ये तो. So preparation was on your own, and you were quite confident that okay. No, I'll be able- nobody's confident and you're very, very arrogant if you're confident. Okay. Extremely arrogant. Then what did you think? Who guided you in that? Nobody.
नो वरी, देन यू मतलब वर इधर योर से ओन पूछ गाइड. लिया और इधर से चेक कर लिया, एक आध कोई जो कोचिंग में दोस्त मिले थे उनसे मोस्टली खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि Okay. कोई भी इतना बड़ा एक्सपर्ट होगा तो वो खाली थोड़ी बैठा है. सी पीपल हु आर दैट गुड दे आर ऑलरेडी इन जॉब्स ना. Right. And the coaching hubs then have other people who कोचिंग्स there. आर रन बाय Yeah. पीपल मोस्टली हु हैव नेवर क्लियर्ड. Okay. थोड़ी कॉमन सेंस लगा लेनी चाहिए हमें लाइफ में. Okay. कोचिंग इज So, रन you बाय know, that's a पीपल. very big notion to Yeah. break if you're Yeah. saying that for people who are preparing, right? Coaching is run by people who haven't cleared. Very few of them are ones who are running. So they're just teaching because they couldn't Yeah. crack. No, that's not the point. Yeah. Mhm. The point is taking someone's opinions who's never been successful at something Mhm. which they're giving you an opinion about. You should take that with a grain of salt. Okay. Okay. You should take that with a grain of salt. So first attempt was in 2010, right? Yeah. And you cleared it. Yeah. And you got IRS thrice, but Yeah. you didn't take it. Or No, there no, was no. yeah, They there didn't was a offer problem. me. Right. Right. They didn't offer me. But there are, I mean, IRS work, it doesn't involve that kind of. Yes. Then precisely. why was that the. is why I won the court case. Right. And then you went on for the court case. How did this happen? Can you just tell us about it? So basically what happened was when I gave my first attempt, I had quit my job with the idea that I will get into either the IAS or the IFS. Okay. So what happened was when I cleared the exam, इस एग्जाम में ना there are two things that you need to know. One is as a person with disability, पहले तो आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते. अच्छा. हाँ, क्योंकि आपकी डिसेबिलिटी जनरल के मेडिकल क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती है, तो यू विल बी रिजेक्टेड ऑन द मेडिकल ग्राउंड्स. सेकेंडली आपका जो ये है ना पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के लिए देर आर टू क्राइटेरियाज. वन इज़ व्हाट इज़ योर एबिलिटी, कि आप क्या क्या कर सकते हो, विच इज़ आप चल सकते हो, बोल सकते हो, पढ़ सकते हो, हाथ मैनिपुलेट योर फिंगर्स, लेफ्ट पुश पुल, सिट स्टैंड वॉक, यू नो उस तरीके का. सेकेंड होता है कि आपकी डिसेबिलिटी क्या है, तो आई यू अफेक्टेड इन बोथ, वन लेग वन आर्म, बोथ आर्म्स बोथ लेग्स, यू नो वन लेग वन, मतलब इस तरीके का. दीज आर फॉर ऑर्थो, दीज आर लिम्ब बेस्ड ऑर्थो. एंड देन मस्कुलर डिस्ट्रोफी एंड यू नो अभी तो एसिड अटैक वगैरह भी काफ़ी ऐड हुआ है, बट बैक देन तब नहीं था. सो नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेन आई एम यू नो मैंने अपना रैंक देखा, आई रियलाइज कि इतना अच्छा नहीं है दैट आई विल गेट ईदर ऑफ दीज सर्विसेज, तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अगैन. सो व्हेन आई वाज प्रिपेयर आई डिडंट इवन चेक कि उसके बाद क्या हुआ. So then when I'm preparing again, I get a lot of calls from other candidates and they're like, oh, do you know what happened to you? And at that point I was not aware something had happened to me. Okay. Yeah, मुझे पता ही नहीं था कि कुछ हुआ ही मेरे साथ. Mhm. You know, तो अगर आपको randomly लोग फ़ोन कर करके पूछ रहे हैं अरे आपके साथ क्या हो गया, and you're like wait मेरे साथ कुछ हुआ है, तो you know you start figuring out, you start wondering कि क्या हुआ भाई, you know. कि So why then are they saying that? Yeah. So then I started trying to understand and I figured out, तब समझ में आया कि मेरी डिसेबिलिटी को सारी सर्विसेज वर रिजेक्टिंग. Hmm. Nobody was willing to accept my disability in the service except for the IAS. Mhm. टोटल लिस्ट में सिर्फ एक सर्विस मुझे अलाउड थी जिसके लायक मेरा रैंक नहीं था, तो Mhm. मेरा कैंडिडेचर ही कैंसिल कर दिया गया ऑन दिस लॉजिक. अच्छा, दूसरा चीज़, दिस इज मेरी डिसेबिलिटी का ग्राउंड. जो एबिलिटी वाला ग्राउंड था दैट आई वाज फुलफिलिंग फॉर ऑलमोस्ट ऑल द सर्विसेज. Hmm. तो बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग इज कि आप काम तो कर सकते हो Hmm. पर हमें आप पसंद नहीं आए, हमें आपकी डिसेबिलिटी नहीं पसंद, हम नहीं लेंगे आपको. Hmm. Which makes no sense, Of course. Yeah. right? And you know the strangest bit is that मेरे को कॉर्पोरेट में जॉब मिल गया बड़े उससे, Hmm. बट सरकार जिसका मैंडेट है टू बी एन To इक्वल be अपॉर्चुनिटी inclusive. एम्प्लॉयर, Hmm. Hmm. वो मना कर रहा है Hmm. ऑन द ग्राउंड ऑफ माई डिसेबिलिटी, Mhm. विच वॉज सो यू नो अनफैथमेबल. तो उसके बाद क्या होता है कि ऑल द कैंडिडेट्स जिन्होंने मुझे कॉल किया था, दे वर एक्चुअली पीपल ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम थिंग. Mhm. उनके साथ भी सिमिलर चीज़ें हो रही थी. So they were calling me to understand what do I know about it and what was this thing. So you helped them also. नहीं, not really in In a that way. sense. Yeah. But then I realized कि this is not fair, this is not done. तो अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, बाय द टाइम आई फिगर्ड ऑल दिस आउट एंड यू नो पूरा का पूरा मेरा वहाँ से ऑफिशियल रिजेक्शन कम्युनिकेट हुआ, तब तक मेरा सेकेंड अटैम्प्ट भी हो गया. और सेकेंड अटैम्प्ट में भी सेम चीज़ हुई मेरे साथ. आई गॉट अ सिमिलर रैंक, सिमिलर सर्विस. वो देन इट वाज लाइक सो अगर खाली मेरी बात होती तो आई वुड हैव लेफ्ट इट, यू नो, बिकॉज मेरे को तो क्लैरिटी भी थी ना कि मुझे उनमें जाना है. Hmm. You know, I was looking only for those two specific services. But then I realized कि I
this gives me a platform to do things for other people which I wanted to do. And all those other people who were giving this exam, they don't come from those well-to-do backgrounds to support themselves and do this. I had worked in corporate, I had savings, I had an excellent salary. My parents were decent financially, so I could fight that. You have to also remember this. India mein na, disability is a function of poverty also. It is, yeah. Right? Poverty becomes a factor in a child having the disability, which kind of grows with the child. क्योंकि मदर को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रॉपर मेडिकल केयर नहीं मिली, चाइल्ड को एट बर्थ नहीं मिली, चाइल्ड को बर्थ के बाद एक्सीडेंट अगर हो गया तो उसका ट्रीटमेंट नहीं मिला, अ लॉट ऑफ फैक्टर्स कम इन, जिसकी वजह से इंडिया में डिसेबिलिटीज़ पॉवर्टी के साथ लिंक हो जाती हैं. स्पेशली पोलियो वगैरह तो होता ही ऐसे था ना, राइट. So I realized कि people who are already coming from disadvantaged financial backgrounds, उनके साथ ये एक्स्ट्रा एक अब वो कोर्ट केस करें, अब वो इस बात पे दोबारा पूरा बैटल लड़े, तो उसके वजह से आई डिसाइडेड कि लेट मी do this because maybe I'll be able to solve this for some other people. And your family was supportive? Yeah. My they family helped you file yes, the case? yes. My Which is family has very- been very supportive, and honestly always say this, that I am very lucky when it comes to the family that I grew up in and I was born in. मतलब, and I think that's the biggest luck you get. हम लोग एस्ट्रोलॉजी में ना ये बोलते हैं कि अगर आपका सन एंड मून अच्छा हो तो वही एक बहुत बड़ा राजयोग होता है. अच्छा. हाँ, एंड सन इज योर डैड, मून इज योर मदर. तो अगर आपको सन एंड मून अच्छा मिल जाए ना, आपका पूरी कुंडली ऐसे ही सुधर गई. हम ये बोलते हैं कि वो ही राजयोग है बहुत बड़ा, विच इज़ ट्रू. क्योंकि अगर आपको अच्छे पेरेंट्स एंड अच्छा परिवार मिल गया ना, आपको और कुछ उसके आगे फिर बहुत बड़ा नहीं चाहिए होता. आपको एक प्लेटफॉर्म तो मिल ही गया. At least you have a good life. Yes, yeah, you have you're good- mentally settled. You're emotionally satisfied. You are able to perform to your ability. True, So How long did the court case हाँ, take? so then Yeah. court case took 2-3 years. 2-3 years. Yeah, वो टाइम लगता ही है इन चीज़ों में. एंड बाय द टाइम कोर्ट केस केम, मेरा थर्ड अटेम्प्ट का भी रिजल्ट आया जिसमें भी सेम चीज़ हुई. Again, the same whole thing was repeated. And now what happens is, I am, when the court case judgment came, so I had won the case. Okay. But again, there was nothing from the government side. There was no movement. Government was like, कि, they were not even Yeah. acknowledging Yeah, the... they weren't. So that's how I ended up giving the fourth attempt. But yeah, so this was what happened. And my aim was कि maybe some policy change will happen. Somebody would wake up and allow all those other people also to get their rightful meritorious place. And then it did. They acknowledged that change and then they No, so allowed it. the change didn't happen at that. Okay. Change actually happened once I got selected, and this whole saga came out. Then in 2014 when नहीं, you 15 में जब रिजल्ट आया, Yeah. and I got selected, and then it came out that I was rejected thrice by IRS, Okay. and I got into IS as rank 1. rank 1. Yeah, so then this whole thing changed, and then there was a policy meeting, and a lot of services and a lot of jobs got identified for people with disabilities. I think 3,000 job roles got identified. That's not posts. That's so that's Okay, like okay. chemistry teacher is now allowed for a person with disability. So Okay. देश में एक chemistry teacher नहीं होगा ना. There are 70,000 chemistry teachers ना, अगर मतलब आप ऐसे देखोगे, मान लो 5,000 chemistry teachers की posts हैं, तो now if chemistry teacher बन सकते हैं, तो it's not It's not limited to only it's not those. one post, it's 5,000 posts. So वो 3,000 ऐसे one post वाला type चीज़ हुआ. So that's multiplied by a few other thousands. So that is So that could happen only when you broke so the that- record and so you were that- the no, first so the people one. started Yeah. understanding कि ऐसा हो रहा है, because बहुत सारी चीज़ें unfair लोगों के साथ selectively कहीं कहीं हो रही हैं जिस पे कोई कुछ नहीं करता है. But this became such a this thing कि oh my god, this happened. So then people in the right That places. you came like you were the first. Yeah, so this rank, whole thing yeah. that I had to go through all of that to get to that, वो चीज़ then prompted a relook at certain things. Had you imagined that you would be, getting all India rank and you'd No. be the first woman, differently able woman to actually, yes, I was the first person with disability to top the civil services. So No, you'd not thought of No. it. and I don't think yeah. anybody does. What did you think that okay, this is my fourth attempt, would it be last attempt? Oh yeah. Yeah? I कि was अब done at last third. है. मैं तो fourth भी नहीं देना अच्छा. चाहती थी. I was just so done at third, but But then, yeah. so आप ये नहीं सोचते हो, आप सिर्फ ये सोचते हो यार मिल जाए, because for me it was about getting to do that work.
It was not linked to my personal ego or anything. I just wanted to get that opportunity to really make a difference. And लोग कहते हैं कि आप एनजीओ ज्वाइन कर लेते या वो कर लेते. आई काइंड ऑफ वांटेड टू वर्क इन ऑल सेक्टर्स एंड मुझे ऐसा लगता है अगर सरकार अपना काम ठीक से करती है तो एनजीओज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. Ideally. सरकार अगर अपना काम ठीक से करती है, मेरा वेलफेयर स्टेट, अगर हम अपना काम ठीक से करते हैं तो फिर देश में एनजीओज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. सो दैट वाज माय पॉइंट. So now and then you joined the services in 2015, right? Yes. And your first posting was in Delhi. Yes. Right. So when you joined the services, what was the reaction from your peers who were also joining, So and your seniors? So I'll tell you, there was a difference when I joined in IRS. Were they very accepting? And So that's what I'm telling you. In IRS, I didn't join as rank 1, right? I Right. joined IAS as rank 1. Right. So there was a huge difference in the way people treated me in IRS and then in IAS. Okay, because of the Yes. rank. Yes. I didn't suddenly become smarter or anything. But world unfortunately does not. किसी के पास नहीं, ये सच्चाई भी है कि टाइम नहीं है किसी के really उसको जज करने का. People will just वो आपके बेसिक्स वो सीवी देखेंगे उसी पे बोलेंगे ना. Nobody has time to really understand who you are and really see who you are, how good or bad you are. लोग उतना ही देख के करेंगे. सो IRS में उस तरह से जो वो है, एंड अगेन वहाँ पे भी मुझे जो फैकल्टी एंड वो थे उनसे बहुत अच्छा वो था. बट नॉट मतलब पीयर ग्रुप में तो पीपल आर अगेन लाइक आई सेड इनसिक्योर. मतलब ग्लोबली पीपल आर इनसिक्योर क्योंकि बचपन से पेरेंट्स, लाइक आई सेड ना, आई वाज लकी, आई गॉट द राजयोग ऑफ हैविंग गुड Sun and पेरेंट्स, moon. बट मोस्ट पीपल डोंट हैव दैट. तो वो चीज़ दैट मेक्स देम इनसिक्योर, दैट गिव्स देम दैट constant feeling of wanting to compete and wanting to put other people down, and Yeah. So with time, has it gotten better now? only if somebody knows that I am actually IS rank 1. But people would know now, isn't not, it? Not No? everybody, no. I think that's in the No, that's not the everybody. news. Let's not assume that level of this thing. But the thing is, if you're a person with disability, the world does not want to treat you like an equal. तो आपको हर इंसान को And पहली that बार, is the truth even now. yes, आपको हर इंसान को अभी भी जो आपको बैकग्राउंड नहीं जानता है दोबारा से कन्विंस करना पड़ता है दैट यू डिजर्व एन चांस एंड एन अपॉर्चुनिटी. हर किसी को आपको दोबारा कन्विंस करना पड़ता है उस चीज़ के लिए. I see. So now, but have you got those friends in the, who support you and, yeah. No, so I don't really need support. I like, mean, that way is that okay? नहीं वो this तो is, I've always been somebody जो I was very lucky with friends. I always had a huge group of friends. So So that has it's, never been a problem. But it's nice now. Yeah. It's usually people who don't know me that Okay. make those assumptions. I see that. Yeah. So because you keep getting posted here and there. Yeah. So which has been, are you now satisfied that, the kind of work you wanted to, are you doing yes, that? Getting I get to to do make that? a difference, and that's all that I wanted. I just wanted an opportunity to actually make things better. Do you around want to me. give any example of, something that actually touched your heart? So Something there that were you two, three did? things Yeah. that I'm very grateful I got to do, and MCD Yes. was one of those projects was during a MCD time. Field postings kind of do give you those chances. So what happened was that I'm also I think the first person in the country to give a transgender person employment in a government office full time on this thing. That is Right. what we were talking about, Yeah, that time, transgenders. right? So what happened was that this was not a sector that I ever thought I would touch or I would work for, or these were not people that I had been in my radar as such. Women, children, people with economic weaker sections, all of that is there. Persons with disability, but specifically transgender persons were not a part of the conscious Right. thought process I had prior to coming into services. But then, once I was invited by an NGO which worked for transgender persons to speak to transgender persons. Okay. And that till date in my life has been the only time when I couldn't speak to people and tell them what they could change about their lives to make it better. I can usually always tell you what you're doing wrong and how you can make things better in your life. That is the advice you can Yes, give. Yeah. because you can't change other people. You can Of only course. change how you behave and react in every situation. So my thing was कि I can tell you कि आप क्या कर सकते हो इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन को बेटर करने के लिए. मैं ये नहीं कह रही आप गलत हो.
आई एम जस्ट सेइंग कि देयर इज समथिंग दैट यू कैन ऑलवेज डू, बट दे वर द ओनली सेट ऑफ पीपल जिनके साथ जो भी हो रहा था उसमें उनका कोई रोल नहीं था, Okay. and there was nothing that they could do or change about their lives on their own. It was the world around them that was extremely cruel. And I came out of that, and it was a 1 hour conversation that I had with them. I understood their lives a lot better, and I was so ashamed of us as a society. I was so ashamed of who we were and how we had been treating this group of people, and how we were judging people for things that they were not, that weren't their fault. You know, if you murder someone, then I should judge you. But if you're Right. born a certain way, I should not judge you. This is one thing that I always say, and I've never actually said it on larger platforms. And I think if this message can resonate with Yeah, anybody, please. nobody decides to be different. Nobody wants to be treated differently, or nobody कोई अजीब बनना नहीं चाहता है. Nobody wants to be somebody that will make the world treat them badly. कोई नहीं चाहता. कोई अलग नहीं होना चाहता. कोई अलग होके ना लोग पॉजिटिव होना चाहते हैं. अलग होके ना कोई नेगेटिव नहीं होना चाहता. सो प्लीज स्टॉप थिंकिंग कि लोग अटेंशन के लिए ये सब कर रहे होंगे. जो वो माइंडसेट है ना कि लोग LGBTQ बन रहे हैं बिकॉज दे आर चूजिंग दैट. नो, nobody chooses to be different in a way that will get them rejected by the society. You know, social need is actually one of the Maslow's hierarchy की very important need. ठीक है, तो nobody chooses to be in such a way कि आपको दुनिया जज करके रिजेक्ट कर दे. तो वो जो सोच है ना, and this is what we were doing. We were blaming them for the way they were born, जो कि Right. बहुत sad and बहुत गलत था. So I decided कि if given a chance, I would want to definitely do something for them. So what happened was, a few days or maybe weeks later, they came to my office and said, "मैम, हमें एक जगह दे दीजिए जहाँ पे हम लोग ना सिलाई कढ़ाई की यानी ब्यूटी पार्लर खोलना चाहते हैं. सिलाई कढ़ाई की टेलरिंग वर्कशॉप एंड ब्यूटी पार्लर खोलना चाहते हैं." I said, नहीं, मैं वो नहीं दूंगी तुम्हें, बिकॉज अगर तुम वो खोलते हो तो दुनिया के पास हमेशा एक ऑप्शन है कि वो तुम्हारी जगह किसी और के पास जाके वो काम करा ले. अगर आपकी टेलरिंग वर्कशॉप है तो किसी और के पास भी मैं जा सकती हूँ ना, टेलरिंग का काम सीखने भी और टेलर के लिए भी. और अगर ब्यूटी पार्लर है तो तुम्हारी ब्यूटी पार्लर में सिर्फ तुम ही लोग आओगे, दुनिया नहीं आएगी. दैट डजंट ब्रिंग यू आउट इन द वर्ल्ड. और मैं वो इंसान हूँ, एटलीस्ट मैं तो ऐसी चीज़ ना करूँ ना जहाँ तुम्हारे को बस सर्वाइवल के लिए टूल दे दूँ, तुम्हारा सोसाइटल एसिमुलेशन में मैं कुछ करूँ ही ना. सो आई एक्चुअली गेव देम वर्क इन माई ओन ऑफिस एट माई फ्रंट डेस्क, Okay. not hidden in a room. I gave them jobs right at my front desk. And एक SDM ऑफिस की रिसेप्शन जो होती है ना, वहाँ पे जो काम होता है वो दुनिया में कहीं आप और नहीं करा सकते. There is no alternative to that. So you have to get that work done only by that set of people, only in that particular place. क्योंकि आप अपने एरिया के SDM से ही वो चीज़ करा सकते हो, आप दूसरे एरिया में जाके नहीं करा सकते. Of course. Right? So people didn't get an alternative to them. And then everybody जिसके पास ये भीख मांगने जाते थे, आज वो इनसे अपना काम कराना आ रहा है. And they're still at the post. Yeah, नहीं, The same. the no. policies got changed, so they're not there anymore. Oh. Certain things got changed in Delhi. But the point was कि आप जिससे काम कराना है ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके साथ अच्छा बिहेव करने की. Right. राइट. तो आज तक ये जब भीख मांगने जा रहे हैं या किसी से बधाई मांगने जा रहे हैं, मतलब भीख, आई डोंट मीन भीख, Right. आई मीन कोई भी अपना काम कराने जा Just रहे to हो, urge कि आप हमें हाँ. ये दे दो. Right. तो जो करा रहा होता है ना अपना काम, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है टू बी ऑन देयर बेस्ट बिहेवियर. Right. अभी तक इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू बी ऑन द बेस्ट बिहेवियर. अब जो पब्लिक आ रही है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई टू बी नाइस टू देम. एंड पीपल फाइनली स्टार्टेड सीइंग देम एज ह्यूमन बीइंग्स, beyond the gender, beyond them being Right. transgender. People started seeing them as human beings. इंसान देख के हमें उससे रिस्पेक्ट से बात करनी है, हमें उसकी फीलिंग्स का ध्यान रखना है, हमें उसे वो करना है कि वो भी हमारी बात सुने. अदरवाइज आज तक वो चीज़ थी नहीं. So So didn't the this power dynamics changed. sorry, didn't this create ripples in the office that you know? No, so what I did yeah. was I made sure that those people are not going to be comfortable. I Okay. called my office in a meeting. सब जितने भी लोग मेरी ब्रांच के थे या नहीं थे, because that office had 2 other SDM and DM and ADM also. I called everybody to मतलब to the conference room and I said, जिसको जो सवाल पूछना है पूछ लो. And then because I came from the same society, I asked a lot of those hard questions, and I made sure कि वो चीज़ जो है I will address those things which are hidden in our society, in our mindset, and which we are not हम बोले ना बट हमारे दिमाग में होती हैं और हमारे बिहेवियर में आ जाती हैं. And then they got
Yeah, so then, comfortable with it. yeah. So then, they were having lunch with the whole team. Okay, बाकी लोगों के that's साथ they nice. would Yeah. have lunch, they would, जो भी है, they got to bond as equals in the office. And they worked there for 6-7 years after that. That's Yeah, great. for you, 18 yeah. के बाद, Mhm. I think 18 में मैंने लगाया था, 18 sometime middle में. So 18 से 24 तक तो they were there, 20. Okay, so it's just very recent. Yeah, very recently. Oh, okay. So we have to ask you this. You get this you ask all the time. So how did you, when you prepared for coaching, people who are coaching for civil services, what is one thing that you want to tell them? Because I have been listening to your videos on, somebody was messaging you on Instagram where you said, okay, I would sleep a lot when I would study, but then that's not exactly the barrier. The barriers are some, they are different. Yeah, so what do you mean? So I mean, what are the actual problems that people face, and what I mean, how can they the prepare better biggest- without getting into the coaching? No, I'm not Yeah. saying don't do that. I'm not Okay. saying that. Even I'm saying with be very that, rational yeah. about coachings. Okay. Don't expect miracles and don't expect कि कोचिंग से तुम पास हो रहे हो. तुम कोचिंग से पास नहीं हो रहे हो, तुम अपनी मेहनत से पास हो रहे हो. कोचिंग के 2 रीजंस होते हैं जब आपको कोचिंग करनी होती है. देयर आर ओनली 2 रीजंस. वन, आपको पता ही नहीं है कहाँ से स्टार्ट करना है, Right, क्या करना right. है, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो आपको यही नहीं पता क्या सब्जेक्ट होते हैं, क्या कोर्स कंटेंट है, कोर्स के जो टॉपिक्स लिखे हैं उनका मतलब क्या है. और लॉट ऑफ टाइम्स आप कोर्स का टॉपिक पढ़ोगे, अगर आप उस बैकग्राउंड से नहीं आते हो तो आपको समझ नहीं आएगा कि किस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं. Right. राइट, आप गूगल करके भी नहीं सीख पाओगे. ठीक है, दैट्स वन. द सेकंड इज इफ यू आर अ पर्सन हु इज नॉट वेरी सेल्फ रेगुलेटेड, तो कोचिंग जाने से ना आपका एक रूटीन बन जाता है. आपको एक रेगुलेशन आ जाती है कि कोचिंग में इतने बजे जाना है, इतने बजे बैठना, उठना है, हाँ. इतने बजे पढ़ना है. आपका रूटीन बन गया. आपको वहाँ पे कोई फोर्स कर रहा है कि टेस्ट के लिए पढ़ाई करो, ये करो, वो करो. फिर वहाँ पे और बच्चों की बातें, बच्चे नहीं मतलब और एस्पिरेंट Right. की बातें सुन के आपको लगता है कि ओके, आई हैव टू डू दिस, एंड यू काइंड ऑफ गेट मोटिवेटेड एंड यू गेट काइंड ऑफ सेट इनटू रूटीन. तो अगर आप उस तरह के इंसान हो तब आपको कोचिंग का वो ज़रूरत होती है, उसके अलावा कुछ नहीं है. So people say, the aspirants want to know when how do they study for long hours? Like people are known, civil services aspirants are known to study 18 hours, 20 Aren't they? hours. They No, at least this that's is a what they myth, say. and Yeah? this is aspirants पढ़ते होंगे, मुझे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स नहीं पता जो पढ़ते हैं. Okay. Is it like that? So what is अच्छा, the average? I mean, there is yeah. no average, and this is not how you're supposed to study. And this Okay. goes for all kids also. Mm-hmm. It is for school studies also. आप ऐसे नहीं पढ़ाई करते हो. ये बहुत गलत तरीका है. एक बात बताओ, आपसे एग्जाम में क्या पूछने वाले हैं? आपसे एग्जाम में क्या आपने पढ़ा वो पूछने वाले हैं. कितनी देर पढ़ा ये कोई नहीं पूछ रहा. सो व्हाई इज योर आउटपुट काउंटेड बाय द नंबर ऑफ आवर्स एंड नॉट बाय हाउ मच यू स्टडी? ये बहुत गलत तरीका है अपनी स्टडीज़ को मेजर करने का और पढ़ने का. अगर आप ये डिसाइड करते हो ना मैं 18 घंटे पढ़ूंगा, आई कैन गारंटी यू आप 16 घंटे सेम पेज को घूरते हो, और देन यू डिसाइड ये बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, मुझे बिल्कुल पढ़ाई में मज़ा नहीं आता, आई हेट माई टीचर्स, आई हेट द सब्जेक्ट, क्या घटिया चीज़ कर रहा हूँ मैं, और आप उसे बंद करके सो जाओगे या रख दोगे, एंड यू विल हेट कमिंग बैक टू बुक्स. आपके लिए ना पढ़ाई इतना बड़ा बर्डन बन जाएगी. पढ़ाई ऐसे नहीं होती. आपको ये डिसाइड करना होता है कि मैं आज 5 चैप्टर करूँगा. मुझे ये 15 चैप्टर्स हैं, मेरे पास 3 दिन है, मैं एक दिन 4 करूँगा, एक दिन 3 करूँगा, एक दिन 2 करूँगा, या जो भी है, मतलब जितने भी एक दिन 10 करूँगा, लेट्स से. That is how you are supposed to study. That's how you are supposed to decide how your timetable is. Not 15 घंटे पढ़ूंगा. 15 घंटे पढ़ूंगा मतलब 14 घंटे एक पेज को घूरूंगा, क्योंकि आउटपुट क्या देना है आपने? घंटे दिखाने हैं ना, पढ़ाई तो दिखानी ही नहीं. घूरते रहो सेम पेज को, लगे रहो 15 साल तक एक पेज को घूरने में. क्योंकि आपने क्या मेजर करना है? आपने मेजर करना है आप कितनी देर किताब के सामने बैठे. ये थोड़ी मेजर कर रहे हो कि कितना पढ़ा. Right. तो स्टार्ट मेजरिंग कि कितना पढ़ा. उसको अगर आपका वो 2 घंटे में हो जाए, वो 10 घंटे में हो जाए, वो 3 घंटे में हो जाए, वो 15 घंटे में हो जाए, चाहे वो 20 घंटे में हो, योर आउटपुट टू बी मेजर्ड हैज टू बी क्या पढ़ा, कितना देर पढ़ा. And how much can you recall? यस, दैट्स Right. व्हाट ना. पढ़ने का मतलब ये थोड़ी है कि कि आपने रन थ्रू कर दिया. पढ़ने का मतलब है याद करा, आपको समझ आया, यू आर रिटेनिंग, यू हैव अंडरस्टूड, यू कैन रीप्रोड्यूस. And then you can also write it in that That's reproduce. duration. Yeah. Okay. Reproduce. That's what I mean. So that is what you're supposed to measure. Anybody who says कि मैं 15-16 घंटे पढ़ता हूँ, they are lying. Because they say कि after once you go to coaching में 5-6 घंटे है, उसके बाद you come back, there are 8 to 9 hours of Are these people self-study. successful candidates? Some of them have gone into, like, I have spoken to IITs and all. So they IIT do के that. बच्चे की बात नहीं करो, they're very cheap, But they're बच्चास. they yeah, I mean, but civil servants, maybe some of them, नहीं. I don't really recall. नहीं, कोई but ऐसे yeah. नहीं करेगा. तो इतना करने की वो नहीं, जरूरत आप 20 घंटे भी पढ़ रहे हो सकते हो.
अच्छा. That's not the point. But then that's not the. That's not the point. Okay. It doesn't matter आप कितनी देर पढ़ रहे हो. Mhm. आप कितना पढ़ रहे हो वो मैटर कितना करता अच्छे है. से पढ़ रहे हो. हाँ, आपने कितना कोर्स करा. आपने 15 किताबें करी कि आपने 5 किताबें करी. That is what is going to decide if you're getting in or not. Mhm. It is not कि आपने 15 घंटे पढ़ा. It is that आपने 15 किताबें पढ़ी थी. मैंने Yeah, अपने so it's the ऑप्शनल के quality of लिए what you कम study, से yeah. कम 50 किताबें पढ़ी हैं. Okay. Not kidding. I have studied more than 50 books for geography. Optional. Mhm. That is the point. It's not कि मैंने 15 घंटे पढ़ाई करी या 20 घंटे पढ़ाई करी या 5 घंटे पढ़ाई करी. किसी दिन मैंने 0 पढ़ाई करी है. किसी दिन मैंने 0 घंटे भी पढ़ाई करी है. The point is मैंने एग्जाम से पहले कोर्स खत्म कर लिया है. Okay. So it has to be diverse Yes. and it has Yes. to be like Yes. thorough, quality. Yes. Yeah. It can't be कि मैंने इतने घंटे पढ़ा है. It is simply कि आपने कितना पढ़ा है. Mhm. Mhm. So you know the sleeping thing that okay now we are falling asleep now I तो can't मुझे do this. आप पता है Yeah. उसमें आप नींद आएगी क्योंकि आपको तो टाइम मेजरमेंट करना है ना. बट आपका अगर मेजरमेंट ये है मुझे 5 चैप्टर खत्म करके फिर आई कैन गो वॉच अ मूवी. Okay. आप फटाफट 5 चैप्टर खत्म करोगे. So would you do that? Like- यस. Okay. आई you गिव माई use सेल्फ the- स्मॉल टारगेट्स कि ये 3 चैप्टर खत्म करके फिर आई स्लीप. या ये अच्छा. 3 चैप्टर खत्म करके आई वॉच अ मूवी. या फिर आई गो फॉर दिस थिंग यू नो. मतलब आई रीड अ नॉवल और यू नो आई गिव माई सेल्फ दोज लिटिल ट्रीट्स. Okay. So पर that's अगर आप something that you घंटे की enjoy ट्रीट देते doing. हो Yeah. कि 3 घंटे बैठ के फिर करूँगा. दैट मीन्स कि 3 घंटे एक पेज खत्म किया Mhm. और फिर आपने ट्रीट भी ले ली. आउटपुट क्या निकला. आपको एग्जामिनर को क्या दिखाना है कि आपको कितना आता है ना. नॉट कि Right. आपने कितने घंटे किताब को घूरा था. Hmm. एंड आई एम नॉट किडिंग. आप किताब को घूरते हो. आप सेम सेंटेंस को 50 बार पढ़ते हो एंड देन यू लाइक कि मुझे समझ नहीं आ रहा है. आई एम True. आई कैन बेट यू दैट हैपेंस टू एवरी चाइल्ड. Uh-huh. Mhm. क्योंकि आप घंटे से पढ़ रहे हो. आप ऐसे पढ़ो मुझे आज 5 चैप्टर करने हैं, मुझे 2 चैप्टर करने हैं, मुझे ये टॉपिक खत्म करना है. दैट्स इट. Okay. So, what is your one straight advice to people who are preparing and like you have to be cool, like not really too much into it or too serious about it, No, or you have to be treat it very as a serious about it. burden. I mean, not as a you No. you take it as a target. No, my one advice is be very clear on why you're doing this. Okay. तुम्हारा मोटिव क्या है, तुम इससे क्या पाना चाहते हो, वो क्लैरिटी होनी चाहिए. तुम्हारी ये नहीं होना चाहिए कि बस ब्लाइंडली कर रहे हैं. वाई, व्हाट डू यू वांट टू गेट आउट ऑफ इट. दैट क्लैरिटी इज मोस्टली मिसिंग. मोस्टली लोग किसी और मोटिवेशन से, किसी ने कुछ कह दिया, कहीं से कुछ हो गया, उस वजह से कर रहे होते हैं. वो नहीं होना चाहिए. Or just to get into that. नहीं, वो job. उन्हें पता ही नहीं है. लोग लबासना के बारे में सोचते हैं. लबासना इज नॉट इवन 1 year. 100 days, 4 months and 1.5 months. That's it. Okay. Lavasana is just that much of your total 35 years of career. उसके अलावा 2, 1 महीने का phase 4 and 1 महीने का phase 5. That is it. Lavasana is less than a year of your life. Mhm. But लोगों का aim is मुझे लबासना जाना है. Like what? No. Okay. So Your aim yeah. has to be that you want to get to do this job. Mhm. You want to get to do this service. You know, work for people like this. Mhm. You can't have an aim about going to Lavasana, which is usually what people ask about and people's aims are, Mhm. which I find very, very unprepared for what you're getting into. Mhm. अगर आपका सोच वहाँ तक है ना, Hmm. तो फिर आपको पता ही नहीं आप करने क्या जा रहे हो. क्योंकि Lavasana is not relevant in the scheme of So things. so whoever is doing it, they should know why Yes, they, be they very should clear have on it. why you're doing this, and the motives have to be your own. आप पड़ोसी को देख के नहीं कर सकते, या आपके माँ बाप चाहते हैं, या कोई अंकल चाहते हैं, या कोई और चाहता है, उससे नहीं कर सकते. You can only do this when you want to do this. So I say this, लोगों को लगता है मैं वो बहुत वो कर रही हूँ, बट मैंने अपनी पूरी की पूरी 1st to 12th की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, MBA की पढ़ाई, अगर मैं सारी वो 1 साल में करूँ ना, सारी पढ़ाई वो 1 साल में करूँ, उससे भी 3 गुना ज़्यादा मैंने सिविल्स के लिए पढ़ा होगा. Okay. In my first time that I was preparing, not after that. Okay, because you got या the, पहली बार के बाद तो फिर आपको रिवाइज सा करना होता है. बट ऑब्वियसली चेंज हो रहा था मेरा पैटर्न हर बार, तो थोड़ा वो अलग था. बट आई एम जस्ट सेइंग कि वो बेसिक्स बिल्ड करने के लिए आपको उतना मेहनत करना पड़ता है. Okay. पहली बार उतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, Mhm. मतलब उतना कोर्स आपको पढ़ना पड़ेगा. तो पहली चीज़ तो अगर यू नो अ लॉट ऑफ किड्स से कि Hmm. NCERT छोड़ दें, एंड हम लाइक इतनी पतली किताब से अगर तुम्हें दिक्कत है तो तुम भी मत करो, क्योंकि वो सबसे बेसिक और सबसे पतली किताब है. सबसे पतली किताब, तो right. अगर आप वहीं पढ़ने में रो रहे हो, फिर आप छोड़, फिर आप नहीं कर सकते. ठीक है. सो बी वेरी क्लियर कि आपको कितनी क्वांटम ऑफ मेहनत करनी है. इट्स नॉट घंटे, इट्स अमाउंट ऑफ स्टडीज. Hmm. दूसरी चीज़, यू कैन नॉट वर्क दैट हार्ड फॉर समवन एल्सेस गोल्स.
किसी और की ड्रीम्स के लिए, किसी और के गोल्स के लिए आप इतना नहीं कर सकते. आप सिर्फ अपने लिए कर सकते हो. प्लस I did a lot. I went out, I saw all the movies, I hung out with my friends, I had a social life, I did everything. समवेयर तुम्हें बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज तुम्हें लगेगा तुम लाइफ मिस करते जा रहे हो. एंड बहुत सारे अदर पर्सपेक्टिव्स जो लाइफ के इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होते हैं वो तुम्हें मिलेंगे ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द थिंग्स दैट केम इन टू आवर एग्जाम वॉज कि टम्बल ड्राइंग क्या होता है. इंडिया में तब टम्बल ड्राइंग होता नहीं था. सो व्हाई डिड आई नो टम्बल ड्राइंग? मुझे आता था वो. क्यों? क्योंकि मेरी एक फ्रेंड यूएस में रहती है. ओके. एंड वो मुझे बता रही थी कि वो अपने कपड़े कैसे वहाँ पे धोती और सुखाती है. ओके. शी इज़ माई स्कूल फ्रेंड एंड शी इज़ टू लिव इन यूएस सिंस फ्रॉम व्हेन वी वर 18. तो ऐसे ही जब मैं उससे फ़ोन पे बात करती थी तो उसने मुझे बताया था कि वहाँ पे ऐसे होता है. शी टोल्ड मी वो टम्बल ड्राइंग है समवेयर वेरी यंग. जब इंडिया में वॉशिंग मशीन में ऐसा कुछ होता ही नहीं था. ड्रायर वाज नेवर अ कॉन्सेप्ट इंडिया में. तब का मुझे ये पता था उसकी वजह से. सो अगर आप दोस्त होते हैं, आप उनसे, मेरे आईटी सेक्टर के दोस्त हैं, उनसे मुझे बहुत टेक्नोलॉजीज़ की तमीज़ आती है. उनसे मुझे बहुत इधर उधर का पता चलता है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, हाउ डज द कॉर्पोरेट वर्क इज फंक्शनिंग, हाउ पीपल आर जनरली. So it's the daily conversations also, yes, yeah? which With your help. friends, So people knowing around people, you. having friends, going out, that builds your perspective. Opens you up. Yes, that builds your perspective. And मेरा job बाद में is not to sit in a room and make decisions. ना. I have to make decisions with the society, so I need to know the society. I need to understand different perspectives. मुझे अगर दिल्लीआइट होके ये नहीं पता कि यूपी के गांव में लोग कैसे जीते हैं, तो मैं जब यूपी के गांव में अगर पोस्ट होती हूँ तो मैं वहाँ पे जाके कैसे पर्सपेक्टिव बनाऊंगी. वहाँ पे उनके प्रॉब्लम्स में मैं दिल्ली के सॉल्यूशंस नहीं डाल सकती ना. True. उनकी सोशल फैब्रिक के हिसाब से सॉल्यूशंस होंगे. Right, so that The setting all of is that, different. yes. Yeah. So don't isolate yourself. Don't Lock yourself up in a room. because a Yeah. lot of your learning is going to come from the world around you, and especially building perspectives. So that's another thing that I would say, that don't make this into a punishment and force yourself to do that. And अगर आपकी priorities सही हैं और you are not somebody who procrastinates and wastes time randomly, मैं ना बिल्कुल time waste नहीं करती. That's one thing I don't do. I don't waste time. That's a very important. मैं कुछ कर रही हूँ ना, देन आई एम क्लियर कि मैं इस समय ये कर रही हूँ. मैं अगर फ़ोन पे गेम भी खेल रही हूँ ना, आई एम वेरी क्लियर मैं इस समय फ़ोन पे गेम खेल रही हूँ. इट्स नॉट समथिंग जो मैं चोरी छुपे अपने आप से झूठ बोल के कर रही हूँ. आई एम रेडी एंड एक्नॉलेजिंग कि अभी मैं गेम खेल रही हूँ. If I'm talking to my friends, and that is my time of talking to my friends. I'm not ashamed or guilty of talking to my friends. I'm not doing that at cost of something else. मैं अगर खेलने जा रही हूँ तो मैं खेलने जा रही हूँ. That is what I'm doing. If I'm working, that is my time to work. तो I am not doing that चोरी छुपे to yourself only. अपने आप से झूठ बोल के जो हम करते हैं ना, मैं वो नहीं करती. If I'm relaxing, I am relaxing. Of course, ये बचपन से आपके पेरेंट्स आपके दिमाग में डाल देते हैं कि रिलैक्स करना इतना बड़ा क्राइम है इंडिया में, है ना. तो आपके पेरेंट्स आपको वो गिल्ट दे देते हैं, जिस वजह से यू एंड अप वेस्टिंग अ टाइम अ लॉट. मैं रैंडम दुनिया के बारे में गॉसिप नहीं करती. मुझे नहीं पता होगा मेरे कौन से रिलेटिव्स के घर में क्या चल रहा है, मेरे कौन से कॉलेज के लोगों के किसके साथ क्या हो रहा है, क्या किसके साथ घूम रहा है, कौन नहीं घूम रहा है. मुझे वो सब कुछ नहीं पता है, बिकॉज दैट्स नॉट रेलेवेंट टू माई लाइफ. तो मैं अपनी लाइफ से रेलेवेंट चीज़ें पता करती हूँ, या किसी जो मेरे आसपास लोग हैं उनकी लाइफ में दे वांट टू शेयर समथिंग. आई एम ऑलवेज देयर. आई हैव ऑलवेज बीन एवरीबडी इज कॉन्फिडेंट. तो दैट इज़ नॉट टाइम वेस्ट. बट रैंडम पीपल अनकनेक्टेड विद मी, उनके बारे में सोच के दुनिया में टाइम वेस्ट करके, दैट डजंट मैटर. So you have to be true to yourself. Yeah. No, I am very clear of what I am doing, why. And that moment, it's not time wastage. मैं अगर गेम खेल रही हूँ, then that is my break time. That is the time I will spend on that. And you have to have small breaks. You in have between. to. Don't feel guilty about taking time out for yourself. जो इंडिया में हमें सिखाया जाता है. That's one thing ingrained into everyone. आपको बचपन से आपके पेरेंट्स ऐसे कर देते हैं कि अगर आप खेल रहे हो या आप वीडियो गेम्स देख रहे हो या आप कुछ वो कर रहे हो, तो ओ माय गॉड कितना बड़ा क्राइम कर रहे हो कि आपने वो टाइम पढ़ाई पे नहीं लगाया. बहुत गलत है ये. मतलब बहुत ही ख़राब चीज़ है. मेरे पापा तो मुझे बचपन में एग्जाम्स में भी खेलने भेज देते थे. कोई नहीं होता था, मैं अकेले खेल रही होती थी सड़क पे, क्योंकि बाकी सबके घर वालों ने नहीं भेजा होता है, मैं ज़रूर जाती थी. एंड आई वाज बाय द वे द कॉलोनी का मतलब टॉपर, स्कूल टॉपर्स में भी थी मैं. You were always a school topper. नो नॉट इन दिल्ली, व्हेन आई वाज इन मेरठ, बैक देन की बात कर रही हूँ. बट मैं तब खेलने भी जाती थी. So the point is the balance is very important. And being clear on why you're doing what, and not feeling ashamed of things. And don't do things that make you feel ashamed. Of course. Then don't do those things. ये झूठ बोल के अपने आप से क्यों जी रहे हो? A lot of times we convince ourselves I'm a nicer person than I really am. Don't do that. Accept you as you are. Maybe then you end up becoming nicer. That's more important. Yeah. You know? Yeah. So,
That's my one Yeah. advice. Thank you so much for so much time and these very valuable tips. These, I think everybody who's watching, some of them would like to take these, very important for life Thank you. and preparation, even if not, then for life, I guess. Thank you so Thank much. you so much. My pleasure. Yeah. I hope you enjoyed the conversation. Yes. I actually spoke about a lot of things that I've not spoken on other platforms. I'm so, glad. Yeah.